अब there are various cases in relation to the emergency provisions. सबसे पहले हमारे सामने केस आता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट द अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट द प्रेसिडेंट कैन इशू इमरजेंसी. द प्रेसिडेंट कैन इशू इमरजेंसी ओनली अपॉन रिटन रिकमेंडेशन of the cabinet. National emergency cannot be proclaimed on oral recommendation of the cabinet. इसके अलावा कोर्ट ने यह भी बोला था that the president cannot proclaim emergency upon his personal satisfaction. There has to be a report by the cabinet. On the basis of which the president can proclaim emergency. This is because the court will have some matter. To look upon to decide that whether the emergency was proclaimed on material grounds or not. यानी कोर्ट यहाँ पे चेक कर सकती है कि इमरजेंसी जो है वो मटेरियल ग्राउंड्स के ऊपर प्रोक्लेम करी गई है या फिर नहीं करी गई है. अगर यहाँ पे कोई रिटन रिकॉर्ड होता ही नहीं तो कोर्ट यहाँ पे एफिशिएंटली डिसाइड नहीं कर पाती दैट वेदर द इमरजेंसी वाज प्रोक्लेम्ड इन गुड फेथ और नॉट. इसके अलावा हमारे सामने केस आता है मोहम्मद यूकुब वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अब इस केस में बोला गया था दैट द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन अंडर आर्टिकल 359 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट लॉ अंडर ब्रैकेट्स में आप लिखना लॉ को is not law under Article 13 of the Indian Constitution and hence judicial review in such cases is not possible. अब इसके अलावा हमारे सामने केस आता है ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला. अब इस केस में बोला गया था that no habeas corpus can be issued for a prisoner during emergency. यानी जो habeas corpus की रिट है इमरजेंसी के टाइम पे एक्टिवेट नहीं हो सकती है. बट दिस वाज द सिचुएशन बिफोर द 44th अमेंडमेंट. 44th अमेंडमेंट से पहले केस था एंड यहाँ पे habeas corpus को बोला गया था that it cannot be activated during national emergency. But after the 44th amendment, this rule was changed and here Article 359 of Indian Constitution was amended and it is written now that Article 20 and Article 21 of Indian Constitution cannot be suspended even during the national emergency. यानी अब जो habeas corpus की रिट है ये एक्टिवेट हो सकती है इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी. अब इसके अलावा हमारे सामने केस आता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब here the petitioner was arrested on the grounds of disturbance of public order. पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए पिटिशनर को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था एंड जो अरेस्ट हुआ था इट वाज अंडर प्रोटेक्शन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट एंड इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दिस अरेस्ट इज इलीगल एंड द पिटिशनर यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वाज रिलीज इन दिस केस. अब इसके अलावा हमारे सामने स्टेट इमरजेंसी यानी आर्टिकल 356 से रिलेशन में भी केसेस है. फर्स्ट केस इज एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब इस केस में बोला गया था कि स्टेट इमरजेंसी कौन से ग्राउंड्स के ऊपर इंपोज किए जा सकती है. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड ओनली इन अकॉर्डेंस विद द सरकारिया कमीशन गाइडलाइंस. एंड यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला था that the president rule can be imposed. The president rule can be imposed if after election no party is in a position to form the government either singly or in a coalition.
सेकेंड यहाँ पे बोला गया था that if the party in majority refuses to form the government, then in this particular case, president rule can be imposed under Article 356 of Indian Constitution. Third यहाँ पे बोला गया था that if the government has resigned and there is no other party in position to form the government, here also state emergency can be imposed. Fourth यहाँ पे बोला गया था that when the state government is not in compliance with the direction of the central government under Article 365 of Indian Constitution, here also state emergency can be imposed. Fifth यहाँ पे बोला गया था that if the state government is acting against the principles of secularism, here also state emergency can be imposed. इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला गया था that on what all grounds the state emergency under Article 356 cannot be imposed. First यहाँ पे बोला गया था that if there is disturbance in public order, then on this sole ground president rule in the state cannot be imposed. Second यहाँ पे बोला गया था that if the governor had not given the party in majority the right to form the government, then in that case president rule in the state cannot be imposed. Third यहाँ पे बोला गया था if there is horse trading of the MLAs, here as well president rule in the state cannot be imposed. इसके अलावा यहाँ पे भी बोला गया था that if the opposition party forms a government in the state, then the central government will not impose the president rule in the state. इसके अलावा यहाँ पे भी बोला गया था that in the case of president rule, first of all the state legislature will be suspended, and after the approval of the parliament the state government can be dismissed. यानी पहले सस्पेंशन होगी लेजिस्लेटिव असेंबली की एंड इसके बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल लिया जाएगा एंड उसके बाद ही स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो सकती है. तो ये लैंडमार्क केस आपको यहाँ पे याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट इमरजेंसीज.